हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंडियन पॉजिटिव रिएक्शंस। मेरा नाम है अभिषेक। मेरा नाम है अंकित। सो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप अपने घरों में बढ़िया होंगे और मौज करे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं एक इंटरव्यू पे, जो इंटरव्यू दिया हुआ है स्पेशल फोर्स इंडियन आर्मी की, जो शायद स्पेशल फोर्स में मैं रह चुके हैं। शायद वो, मुझे गाइस कंफर्म नहीं है वो अब रिटायर्ड हैं या फिर ऑन ड्यूटी हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता देना। उनका नाम है मेजर विवेक जैकब। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को कमेंट आए थे 2-3 दिनों से कमेंट बॉक्स में। वो लोग कह रहे थे इनकी वीडियो पे रिएक्ट करें। मुझे गाइस पर्सनली कुछ नॉलेज नहीं है इनके बारे में, बस इतना पता है कि स्पेशल फोर्सेस में थे ये। और ये मेजर गौरव आर्या जो हैं उनको मैं जानता हूँ, तो उन्हीं की तरह शायद ये कुछ एनालाइज करते हैं और टिप्स देते हैं जो भी इनको देते हैं। तो इनके बारे में इतना जानता हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो तुझे पता है कुछ इनके बारे में? नहीं, मैं नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। तो वही तो मुझे कमेंट बॉक्स में लगा था पता, जब मुझे इनके बारे में पता चला तो फिर मैंने सोचा यार इन पे रिएक्ट करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कैसे है। तो गाइस, वीडियो का जो टाइटल है वो है द स्पेशल फोर्स माइंडसेट एंड एटीट्यूड। मतलब जो स्पेशल फोर्स होती है उसका कैसा माइंडसेट होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने शायद बात की है मेजर विवेक जैकब ने। तो चेकआउट करते हैं कैसी है वीडियो, फिर मिलेंगे वीडियो के बाद। लेट्स बिगिन द वीडियो। 1 2 3 एंड स्टार्ट। Suddenly, a whole like machine gun fire started on us. Accurate machine gun fire. Like स्टोरी बता रहे हैं अपनी। how chaos comes out of the darkness. Boom. Accurate fucking bloody this big motherfucking bullets come. ओ भाई, लैंग्वेज देख रहा है, एटीट्यूड। And बंदा I just सुन thought के at that जोश point आ of जाए। time that the man who stands now and returns fire, he's the leader. So I stood up and I started fucking firing back. भाई तो मैंने देखना चाहिए था पहले, पता नहीं चला यार, बंदे की वाइब्स ही सही Indian है। special forces, for someone who knows about the army, it's considered okay. This is like the most, for lack of a better word, badass part of the army. And there's not much about that out there. And I know it's going to change in the next 10-20 years, sir. But if the change had to begin with this question, how would you introduce the Indian special forces to the Indian audiences? Special forces stand for efficiency. It's the highest form of efficiency that a human being can achieve in this reality. You send me naked in a mountain and you leave me there, I'll get back. And I'll go and do what needs to be done because I've chosen that experience. So that's where the spirit comes from. So 3 years in the NDA and then 1 year in the IMA, and then after all of this intense amount of ragda, हाँ, रगड़ा बोलते हैं आर्मी still में। choose for more. मैं एनसीसी में था ना, मैं को कमांडो था, मैं भी लगाता था काफी को। From the moment you land up at that gate, from there onwards, your life shifts. All your paraphernalia of your ego and your perceptions of yourself and all those things, they dissolve in the amount of energy which is expended or you are exposed to. It just shatters all that is around you, and very quickly you are brought out from there. You come to realize about yourself, वो training की videos what है। your body is capable of, what your mind is capable of, what your heart is यार, capable हम of. कीचड़ देख के And what is उधर से there हट जाते हैं। beyond ये when you कीचड़ give के up, अंदर when you just let it रगड़ all go रहे हैं। and you're hanging by that इनकी thread प्रैक्टिस ऐसे हो of रही है। choice. This is a choice you made. So you're hanging by the thread of choice, constantly there. Even if Yamraj comes and stands in front of you, you'll tell him, fucking put a bullet in you, man. Get the fuck out of my way. गजब भाई। Salute, Through this sir. process, and from what I hear, it's a lot about तो जोश breaking है भाई down बहुत। तो मैं all ऐसे the layers, खुद के getting ना to ऐसे the रूह top. भाई मन The कर रहा process भाई। breaking those उनकी बातें layers, सुन के some तो भाई बंदे people ऐसे मारने चले जाए किसी को। and those are हाँ, the मैं वो गन दे दो, मैं भी चला। ones who are left with that pure core, they यार, become but more experience powerful. चाहिए ना। Well, now you realized yourself. ये पता नहीं You know कितने what you are. साल ट्रेनिंग You करते हैं, just फिर look जाते back at हैं। what you have gone through for this long period of time, and then you realize that nothing is impossible. Nothing. Nothing is impossible, guys. Combat also continues your training process. Of course. It's like a painter who hasn't painted. If a special forces soldier has, you've gone through NDA, you've gone through IMA, you've gone through a lot of shit in life, you volunteered, you got into, reached the battalion, gates of hell, and you reached there, and you've gone through a process of 6 months of bloody getting screwed up and this, that, and all that, and then you have not seen combat, or you've seen very less of combat. You're not there. So I remember my first combat experience
what happened? I was sitting on top of a mountain. We had to go down and do what we had come there to do. So I was supposed to sit with the radio set and listen. But my team commander told me to listen and learn. That's what he told me. Keep sitting there. See what happens. So I was sitting and waiting. And then the 2 squads which were going down for the hit, they were passing by just next to me. Yeah, they were going down. And I knew, fucking, they are going for combat right now. They are going to experience right now. And the last guy was going, and I just told my buddy, I'm also going, bye-bye. and I went down behind the last guy. So I reached there, and I informed my team commander that, sir, I am here now. So he said, okay. And obviously there is no extracting me back from there now, because the contact is going to happen now, right? So he let it be. It was my choice. So, and then first op, first contact, first hit. That's how I experienced it. I chose it. Sir, OP. There is no authority in combat. When the shit is flying and death is like constantly zipping around you, like that, there is no authority. There is no captain, major, colonel, brigadier. Frickin' no one. It's just you and the people who are there with you. And what are you going to do right now? That is what decides leadership there. That is what either keeps it all together or everything is destroyed. In all your missions, you've not seen casualties to the extent where, I don't think you've taken a bullet yourself or you've not had a bullet injury. Nothing. Every fucking time chaos has hit, right? Through that chaos, never taken a bullet. Had enough of fucking bullets fired at me. I've had fucking weapons shoved in my face. I've been surrounded by enemy. I've opened my hands like this and looked at him in the fucking eye and told him, it's okay, I've killed 4 like you. Okay, kill me, man. Fuck off. Right? And then look beyond what is there to see what is there now. भाई बातों में इतना दम See it है and ना भाई experience बंदे it. Like my whole life flashed in front जो of me. 3 times personalities it has होती है ना happened. officers की Whole life flash like that. It's a flash. It's beyond time. There is no time. It doesn't happen in a microsecond or a 1 second or a 10 seconds or whatever. Just happens. Stuck. So yes, there have been lot of out of control chaos which has come like that, come suddenly, come without warning, and got out of it. Yeah. ये मनोज पांडे जो विक्रम बत्रा जस्ट सबकी बातें दिखती हैं। तो गाइस यहाँ पे वीडियो का एंड होता है और कसम से इतनी इंस्पिरेशनल और इनकी मेरे को भेज दो अभी करने लेके मैं चला जा इनकी बातों में इतना दम था ना कसम से। अगर कोई बंदा फट्टू सा बंदा भी होगा ना उसको अगर सुना दे इनका एक बार लेक्चर वो खुद चला जाए लड़ने। भाई मैं कह रहा हूँ मुझे भेज दो अभी लड़ने के लिए। भाई क्या मतलब इंस्पिरेशन क्या बात है सुनी मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है भाई। नथिंग इज इम्पॉसिबल भाई जिसको मारा मारो। क्या कसम से इनकी स्टोरी मुझे सही लगी और काफ़ी इंस्पिरेशन थी। मैंने पता नहीं पहले इनके बारे में कभी सुना नहीं मैंने वीडियो भी देखी थी। मैंने काफ़ी रियल हीरोज हैं जिनके बारे में हम इनकी और रियल लाइफ है इनके मतलब लोग तो एग्जांपल्स देते हैं ना कि ऐसा हुआ था ये हुआ था ये रियल लाइफ स्टोरीज है। और मैं गौरव आर्या को जानता हूँ उनकी वीडियो देखी हुई है मैंने पर इनको मैं नहीं जानता था और इनकी गाइस वर्डिंग्स कसम से बहुत नेक्स्ट लेवल थी। पर्सनैलिटी एटीट्यूड जो होता है ना बंदे में कि मतलब होता है वो आर्मी वाला है उस वैसी पर्सनैलिटी गाइस। और काफ़ी अमेजिंग उनकी जो स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा देने कन्वे करने का मैसेज बहुत तगड़ा था। काफ़ी इंस्पायरिंग थी। इंस्पिरेशन स्टोरी बताई जैसे अपनी कि मैं वहाँ बैठा हुआ था पहाड़ पे मुझे कहा मेरे ऑफिसर ने कि चुपचाप सुनता रहे और सुन के सीख ले। तो कहता कि सब more you listen, the more you learn। तो कहता कि सब जा रहे थे तो मैं भी चुपचाप पीछे लास्ट वाले के पीछे मैं भी चला गया। और फिर वहाँ जाके जब कांटेक्ट हुआ तो फिर उसने कहा ओके तो लड़ ले। तो वो उनका पहला कॉम्बैक था। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी गाइज। और आप हमें लिंक भेज सकते हैं गाइज अगर और भी ऐसी इनकी वीडियोज़ हैं। मैं काफ़ी और वीडियो पे लाइक करना चाहूँगा इनकी। तो फिर से मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद।